गाइस, तो हमारे पास एक NDA का क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज़ का, जो कि अप्रैल सेशन में पूछा गया था. तो लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व दिस. सो वी कैन सॉल्व दिस बाय टू मेथड्स. पहला हम एक शॉर्ट मेथड से करेंगे, उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड से इसको ट्राई करेंगे. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस मेथड वन, शॉर्ट मेथड. सो इन दिस मेथड व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं कोई भी दो नंबर्स AP में. ठीक है. अब हमें ऐसा एजम्पशन करना है, वी नीड टू एज्यूम PQR इन AP, लाइक वी नीड टू एज्यूम सच दैट कि ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करे. दूसरी कंडीशन क्या है? Q माइनस P, R माइनस Q एंड PR इन GP. इस तरह से हमें एज्यूम करना है. तो फॉर अ वाइल लेट अस टेक टू नंबर्स 2, 4, 6. तो इफ़ आई एम कंसिडरिंग, हाँ ये AP में है विद कॉमन डिफरेंस 2. अब एज आई एम सेइंग दिस एज PQR, तो क्या ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ Q माइनस P, दैट इज़ 2, R माइनस Q, दैट इज़ अगेन 2, एंड P, दैट इज़ 2. सो एज यू कैन सी 2, 2, 2, दिस इज़ इन GP, यस, हैविंग कॉमन रेशियो. तो ये GP वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करना. नाउ वी नीड टू चेक द रेशियो. तो वी कैन डायरेक्टली चेक द रेशियो, P प्लस Q रेशियो Q प्लस R रेशियो R प्लस P. तो वी कैन हैव ना P प्लस Q दैट इज 6 रेशियो 10 रेशियो 6 प्लस 2 8. तो डायरेक्ट आंसर वी विल गेट 3 रेशियो 5 रेशियो 4. दिस इज द डायरेक्ट आंसर you will get from here. Okay. So this is the method. You can easily solve this in a minute only. सेकेंड, ट्रेडिशनल मेथड कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, ट्रेडिशनल मेथड. सो ट्रेडिशनल मेथड में हमें एज्यूम करना पड़ेगा. तो इन द मेथड टू यू कैन एज्यूम, सपोज एज आई एम सेइंग PQR इन AP, PQR in AP, so you can consider P and you can consider Q as P plus D and you can consider R as P plus 2D, where I am saying D is the common difference. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है कि P माइनस Q माइनस P, Q माइनस P दैट इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस ओनली, R माइनस Q अगेन कॉमन डिफरेंस, एंड P दिस इज इन GP. ठीक है. सो आई एम सेइंग दैट D P दिस इज इन GP, एंड व्हाट वी नो ना, सिंस if A B C are in GP, then we know condition B square is equals to AC. So we can directly write D square is equals to DP. This will give you two values of D. How? If you take D square minus DP and if you take D common, then you will have this thing. Okay. So you will get two values of D, either 0 or P. But D cannot be 0. So only the possible is D equals to P. D cannot be 0 because the number are distinct. Okay. So the P will be P only, Q will be now 2P and R will be now 3P. Okay. So R will be 3P because D is P. So if it is asking P plus Q, that is 3P, Q plus R, that is 5P, and R plus P, that is 4P. So now this ratio is 3P ratio 5P ratio 4P. That is 3 ratio 5 ratio 4. So that's how you can solve in traditional way. Thank you.